Assalamu alaikum, dear students of class 10th. We are discussing chemistry, covalent compounds, and today we are going to discuss properties of covalent compounds. Covalent compounds are the compounds formed by the sharing of electrons between two atoms. When two atoms combine chemically together by sharing of the electrons, the bond formed is called covalent bond and the compound formed is called covalent compounds. कार्बन कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स, इसलिए हम कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ने से पहले कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जानना चाहें. That's important. Covalent compounds consist of molecules. For example, H2, O2, Cl2, H2O, carbon dioxide. These are the familiar molecules you are with. These are hydrogen, oxygen, chlorine, water, carbon dioxide. These represent the molecules. All these molecules are formed by the covalent bonds. ठीक, जो हमने कल स्ट्रक्चर भी इनका ड्रा किया है. Second property of covalent compounds is that they are generally liquids and gases at room temperature. It is because the force of attraction or the bond between these molecules, between these atoms is weak. So these molecules or these substances in which the covalent compounds or covalent bonds are present, these substances or these compounds are generally liquids and gases at room temperature. And room temperature, you know, it is 25 degrees centigrade. There are few solid volatile solids. मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, आप भी नोट डाउन करके रखिए. जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, they are gases. They are gaseless covalent compounds. CCl4, it is carbon tetrachloride. आगे हम इसे पढ़ने जा रहे हैं. CCl4, carbon tetrachloride. C2H5OH is ethanol. C2H5O, C2H5 it is ether. एंड ब्रोमीन. ये हाइड्रोकार्बन हम आगे इसी लेसन में पढ़ने जा रहे हैं. आप फिलहाल ये याद रखिए कि दीज आर द सम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स और सम ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स और सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट इन एज लिक्विड्स इन द रूम टेम्परेचर. ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं एट रूम टेम्परेचर. एंड देयर आर फ्यू सॉलिड सब्सटेंसेस व्हिच आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. दे एग्जिस्ट एज द सॉलिड्स ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, आयोडीन. These are some of the solid substances of covalent compounds. Third important property is they have generally low melting and boiling points. Melting point means कि अस कसा एनर्जी पे दिन इन मॉलिक्यूलन हुन बॉन्ड फुटरान खतर. चूंकि गोडे पोर कि कोवलेंट बॉन्ड यह वीक, इसलिए इन पे कम एनर्जी हूँ जरूरत यह बॉन्ड ब्रेक करने खतर. Hence the compounds made of covalent bonds or the covalent compounds in general, they are having low melting and low boiling points. And next property of covalent compounds is they are generally insoluble in water. Generally, that means most of the carbon compounds or the most of the covalent compounds, they are insoluble in water. In एम आबस मज या polar solvents मज dissolve गसान कह तेल का dissolve गसान, they get dissolved in non-polar solvents जो अभी हमने पढ़े, that is benzene, carbonate, carbon tetrachloride और ether etc. ठीक, ether, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लेकिन वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होती हैं. अब सारे देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस आर देयर लाइक HCl and NH3. These are the covalent compounds. HCl is also a covalent compound, NH3 is also a covalent compound, but they are soluble in water. And last but not least is that these compounds do not conduct electricity. Covalent compounds जो हैं, their solutions do not conduct electricity. It is because of neither they contain any ions, nor their presence, nor they have some presence of the free electrons in them. That is why their solutions are poor conductors of electric current. After that, let us discuss one more important topic about the covalent compounds is that before discussing, in broad case discuss that why are carbon compounds found in so much quantity. क्यों कार्बन के कंपाउंड सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड से ज़्यादा हैं, या क्यों कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, कार्बन की ऐसी कौन सी खासियत है. बिफोर डिस्कसिंग दैट, लेट मी डिस्कस वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एंड दैट इज एलोट्रॉपी. व्हाट इज एलोट्रॉपी? Allotropy is the property of an element to exist in two or more than two forms having same chemical property but different structures. जैसे मैं आपको ये बताऊं कि मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, ठीक, अगर मैं बाजार से
3-4 किस्म के ऐसे मार्कर्स लाऊं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हो, अलग अलग प्रॉपर्टी हो। कहाँ लिखान जविल, कहाँ लिखान मोट, कहाँ लिखान ब्राइट, कहाँ लिखान डिम, ठीक। लेकिन अगर मैं इनकी केमिकल कंपोजिशन जानने की कोशिश करूँ, इफ दे आर मेड ऑफ सेम साइज सेम मटेरियल, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, कहाँ मार्कर सा जिस स्ट्रक्चर किसी मार्कर की दूसरे स्ट्रक्चर हो, लेकिन जो इनकी केमिकल कंपोजिशन हो वो सेम हो। इन केमिकली आसन सेम मगर फिजिकली आसन डिफरेंट, फिजिकली आसन डिफरेंट, इवन स्ट्रक्चर डिफरेंट, ठीक। फिजिकली डिफरेंट, इवन मास डिफरेंट, इन डेंसिटी डिफरेंट, इन कंडक्टिविटी डिफरेंट। सो इथन फार्मन यम एक सबस्टेंसिक, एक मैट्रिक, एक एलिमेंटिक, एक एटमिक, एक किस्म एटम बनामत आसन, लेकिन physically आसन तम different, such forms are called allotropes. Such forms are called allotropes. And the property of existing in two or more than two forms having same chemical property but different physical property, that is called allotropy. तो कार्बन की भी ये प्रॉपर्टी है, that is allotropy. Allotropy is the property. Allotropy एक प्रॉपर्टी का नाम है. Property of an element, general definition of an element to exist in two or more forms in मुख्तलिफ शक्लन मज having same chemical properties but different physical properties. This property of an element कि यह exist गसान तिफन दोन या दयो खा ज़्यादा फार्म मज यमन chemically आसन same मगर physically आसन different, their property is called allotropy, and those forms are called allotropes, and the forms are called different forms are called allotropes. Carbon is generally found in two allotropes forms. Carbon is generally found in the nature in the two different forms. One is called graphite and another one is called diamond. One more form of the carbon has recently been discovered, that is known as fluorine, or it is known as Buckminster fluorine. Buckminster fluorine. Fluorine. These are the three forms. Two are the ancient ones and this is the recently discovered one. जो diamond and graphite है, it means, what does this mean? That these three forms, it means this graphite is made up of carbon atoms, diamond is made up of carbon atoms, this fluorine atom in molecule, this fluorine is also made up of carbon atoms. These are the three different forms of carbon that are found in the nature. But when we examine the properties of these three forms, they are chemically same. Chemically means all these three forms are made up of carbon. But when we examine their physical properties, their structure, their density, their melting points, their conductivity, they all differ in each other. They all differ from each other in those physical properties. That is why we call them allotropes, because these are the forms having same chemical property, but they differ in their physical properties. Such forms made up of same kind of atoms but different in their physical property are called allotropes. And ये property किस atom की है? Carbon की. This property of carbon is called its allotropy. So what's the difference between diamond and the graphite? Diamond and graphite में difference ये है, similar to ये है, both are made up of carbon atoms, लेकिन difference ये है, in graphite each carbon atom is surrounded, you know that carbon की valency क्या है? शाबाश, कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4. Though carbon is having 4 valence electrons, that is tetrahedral structure is carbon का, but in graphite each carbon atom is surrounded by 3 carbon atoms. ठीक, one of the electron is set free, or we can say here exists a double bond in between. या तो कहीं पर कहीं double bond exist होता है या ये electron free है. तो double bond जहाँ पे भी आएगा तो weakness हो जाती है. ठीक, तो उस कंपाउंड में जनरली वीकनेस आती है जिस कोवलेंट कंपाउंड में डबल बॉन्ड आता है, क्योंकि डबल बॉन्ड मीन्स ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स ये सेटिस्फैक्टरी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते हैं, तब मजबूरन ये कार्बन के एटम्स एक दूसरे एटम के साथ अपने ही एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं. तो डबल बॉन्ड इज द वीकेस्ट पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑफ अ कोवलेंट सब्सटेंस. कोवलेंट सब्सटेंस में अगर
तीन तरह के सब्सटेंसेस होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। सबसे वीकेस्ट जो इनमें है दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। उससे ज़्यादा वीक है, उससे कम वाला वीक है कौन सा? डबल बॉन्ड वाले। तो कंपेरेटिवली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द टू एटम्स दे आर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड्स। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं दैट मीन्स दीज बॉन्ड्स कैन इजीली बी ब्रोकन। ठीक, तो एक एटम फ्री होता है, यहाँ हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट्स अ सिंगल डबल बॉन्ड at every carbon atom. At every carbon atom one electron is free, or we can say at every carbon atom there exists a one double bond. But in case of diamond, each carbon atom is surrounded by 4 carbon atoms. In each carbon atom is surrounded by 4 carbon atoms. आई बात समझ? In diamond each carbon atom is surrounded by 4 carbon atoms. अब इससे क्या होता है? This arrangement of carbon atoms in diamond like this, that each carbon atom is surrounded by 4 carbon atoms, it gives rise to a rigid structure. एक rigid structure बन जाता है जहाँ पर कोई भी वो weakness नहीं रहती है। That is why the diamond becomes the hardest substance. ये सबसे हार्ड सब्सटेंस बन जाता है और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा बन जाती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है, बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड बिकॉज ऑफ दैट ईच कार्बन एटम, when every carbon atom is surrounded by 4 carbon atoms, there is no valence electron, there is no free electron, no double bond or no triple bond, all are covalent single bonds. Hence this gives rise to the rigid structure, three-dimensional rigid structure having high melting point of 3843 Kelvin. 3843 Kelvin and having a density of 3.514 grams per centimeter cube. Whereas in graphite, each carbon atom is surrounded by 3 carbon atoms. Every carbon atom lets one of its electron free. That means there is one electron free at every carbon atom, or there exists a double bond, that is weakness in every carbon atom. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है that is hexagonal structure. और फिर जब डायमंड का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा जाता है तो these hexagonal structures formed by the combination of carbon particles in hexagonal structure बनन छ, they are arranged in layered form. यानी एक hexagonal structure, ठीक, this layer is set over the another hexagonal structure. इसी तरह आपको ये बनानी है, ठीक है? Hexagonal means 6-dimensional structure. These layers, these hexagonal structures are arranged one over the another, held by weak forces. These layers are set one over the other, but held by weak forces. That is why they are able to move over each other. ये एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर सकते हैं, and it is because of this that graphite is slippery in touch. जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा कि कार्बन के ब्रशेस बनाए जाते हैं ग्रेफाइट की, बिकॉज ग्रेफाइट इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग, इट इज स्लिपरी टू टच, ठीक, एंड बिकॉज ऑफ हैविंग दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स in at every carbon atom, this is good conductor of electricity. The arrangement of carbon, the main reason जो आपको समझाने की ज़रूरत है वो ये है या समझने की ज़रूरत है कि दोनों ग्रेफाइट और डायमंड एक ही एटम के बने हुए हैं, लेकिन डिफरेंस इसलिए है क्योंकि arrangement of atoms is different. It is because of the different arrangement in the graphite and diamond, this results in the difference in their physical properties. One is bad conductor, another graphite is good conductor. Diamond is the hardest substance and graphite is the soft substance because it is having double bonds or free electrons and layered structure. It can be easily cut. So graphite is a good conductor or slippery to touch. It is black in color, but the diamond is shiny in nature. This we will discuss its reason for having shiny appearance in light or human ion colorful world. ठीक, that will be discussed in that unit. और अगर आपने पढ़ा होगा human ion colorful world तो आपने रिफ्रैक्शन, ठीक, डिस्पर्शन, उस लाइट्स पढ़ी होगी तो वहाँ पर भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने के बाद, दिस रिजिड स्ट्रक्चर होने के बाद उसमें ये चमक
जो ये शाइननेस आती हैं वो किस तरह आती हैं, इट इज बिकॉज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो भी आपने पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पर हमें ये याद रखना है दैट कार्बन एग्जिस्ट्स इन 2 different forms or 3 different forms having same chemical property but different structures. Why different structures? Because arrangement of carbon atoms in diamond graphite and Buckminster fluorine is different. Otherwise they are made up of all carbon atoms. Its molecular formula is C60. अब इसको Buckminster fluorine क्यों कहते हैं? Its structure is like that of the वो है ना सॉसर, फुटबॉल लाइक दैट ऑफ फुटबॉल की तरह भी है, गोल है या डोम शेप्ड है। ठीक, अब देखिए वो डोम शेप्ड बॉल। ठीक, अब इसका जो एक्चुअली अमेरिका में एक आर्किटेक्ट था, उसका नाम था बकमिंस्टर। ठीक, उसने वो गर्ल्स वो डोम बनाए थे, वो स्ट्रक्चर बनाए थे। जब बकमिंस्टर फ्लोरिन डिस्कवर हुआ तो जिस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया तमिस स्ट्रक्चर वुच, तमिस आज जहनस मन सह स्ट्रक्चर युस ऑलरेडी अतिहास मज बनामत यूनिवर्सिटी मज बनामत तम आर्किटेक्टन डिजाइन दितमत तम स्ट्रक्चरन हंद यानी तम हॉलन हंद और यम डोम शेप्ड अमिस आव सू स्ट्रक्चर जहनस मज दोपन युस यह मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन रिजेंबल कर अम सिंदिस स्ट्रक्चर सत डिजाइन कोर्मुत यम आर्किटेक्टन, अमिस नाव बकमिंस्टर, इसलिए पे पे अथ थोक अम सिंद पे नाव, इट इज नोन एज बकमिंस्टर फ्लोरिन। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C60. So after knowing that carbon exists in 3 different forms, diamond, graphite and Buckminster fluorine, and having different physical properties, now we reached the main question of this unit, that is carbon and its compounds. Why are carbon compounds innumerable, or why are they found in millions? What is the uniqueness of the carbon atom, और what is the reason for its versatility? ये इतना वर्सटाइल नेचर क्यों रखता है, क्यों इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। इवन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम जो भी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, दे आर मेड ऑफ कार्बन, उनमें कार्बन एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। जो प्रॉपर्टीज़ कार्बन को ये यूनिकनेस अता करती हैं, जिनका प्रॉपर्टी से कार्बन यूनिक एलिमेंट है आउट ऑफ दिस 115 एलिमेंट्स में, उनमें 3 प्रॉपर्टीज़ खास हैं। One of the properties is tetravalency. Tetravalency. यानी अमिश 4 नर, अमिश 4 इलेक्ट्रॉन, अमिश 4 वैलेंसी, यमो सहित ये 4 डिफरेंट एटमन सहित एक साथ एक 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए 4 डिफरेंट एटम सहित। 4 से बना टेट्रा वैलेंसी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट कैन शेयर, तो इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन, तो इट्स वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी। इट इज़ वन ऑफ द रीजन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Second reason is the important one, most important one, that is catenation. And what is catenation? Catenation is self-linkage. Self-linkage. Self-linkage means कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। लेकिन कार्बन की एक खास खासियत ये है दैट कार्बन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड्स बनाता है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ लिंकेज। That self linkage is called catenation, that will be discussed in detail. And third important property is carbon forms multiple bonds. एक तो ये सेल्फ लिंकेज है, दूसरी इसकी जो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म multiple bonds. Multiple bonds means carbon can form single bonds, double bonds and triple bonds as well. कार्बन की ये खासियत है, ये किसी एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, किसी एटम के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, किसी एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो these are the 3 properties that make carbon a unique element in the periodic table. And one more adding to this total or KT is that it is small size. Small size. अगर आपने कल का याद रखा होगा, कार्बन belongs to the group 14th of the periodic table and it is the first member of the group. First member. तो हमने periodic classification में आपने ये डिस्कस किया होगा that when we move down the group, atomic size increases, atomic radius increases. So when we move down the group, atomic size increases. Yellow khaso from top to the bottom to the top, atomic size decreases. Sare ko smallest ko sa group was that is carbon. It is
small size is also a property which makes it along with these properties. It is not only because of small size. It is not only because of small size, but small size is one of the property as well that along with all these properties make carbon a unique element in the periodic table, and that is why because of these properties we find carbon and its compounds in so many numbers or in millions. Inshallah, by tomorrow we will discuss what are in these properties in detail. What is tetravalency, what is catenation, and what is the tendency of carbon to form multiple bonds. That is single bond, double bond, or triple bond. Thank you for watching. Today it is enough. Khuda Hafiz.